2003 में पार्ड में साउथ अफ्रीका में और 2011 में दिल्ली में भारत ने जीत दर्ज की थी। मेकरन के बाद अब यॉन बीक नया ओवर लेकर के आए हैं और भारत का स्कोर 38 के बाद अब 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Yeah, Netherlands of course have had their moments even in the T20 World Cup, and as Shivendra rightly said, they are an associate nation because we tend to forget that Ireland is actually a test playing nation, who's the other team which has done very well. Zimbabwe also. Zimbabwe at one time was a really good team, went down and now they've come up again. So good to see these teams doing well, and this one, once again, Rohit Sharma going a ball which was slightly short, trying to pull it, not on top of that one. It's not the fluent Rohit Sharma one is accustomed to seeing. He's really actually struggling with his timing, as one could see that. But Virat Kohli on the other hand, after that innings, that memorable, that never to be forgotten, once in a lifetime innings of 82 not out against Pakistan, looks so much very assured, and he's always, what's good about Virat Kohli, even though he has such a good strike rate, he plays proper cricketing shots. There's nothing ungainly, nothing ugly about his batting. As the next one from bowler has once again Kohli, he does well to rotate the strike, just plays it short of the fielder coming in from mid wicket, gets an easy single. Van Beek bowling his first over, and that point that Shivendra was making, that Indian supporters would have been hoping that India off to a flyer, especially when you are playing against a, maybe I would say, less fancy team, but in cricket and especially in the T20 variety, things just even out. And what is good to see is the Netherlands bowlers are bowled according to the situation, according to the conditions. They have slowed it down, they are not going full tilt, and with the result that the Indian batters have having to really force the pace, so to say, in their strokes. As the next ball, and this time Rohit Sharma, this has gone skywards. Has it gone the distance as well? Yes, it has. So the hitman finally hitting a six. He did hit a six earlier as well, and then we saw him struggling a bit. This time was on top of that one and send it into the stands at mid wicket. What a shot that was, Shivendra. बेहतरीन स्ट्रोक, और बार बार याद आ रही थी हिटमैन के हिट्स की, हिटमैन के शॉट्स की, और उसकी याद दिलाई उस याद को फलीभूत किया रोहित शर्मा ने। बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, और उम्मीद यही करें कि वो जो स्लॉपी एक बैटिंग थोड़ी सी रही है उसको पीछे छोड़ेंगे। हालांकि अगली गेंद पर अपील हुई है, मिडिल और लेग स्टंप पर थी और एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए हैं, लेकिन तुरंत रिव्यू लिया गया है। Yes, it's taken a review. Maybe the Indian batters have also become wise, because we saw on the replay a little earlier, Shivendra, that KL Rahul, had he taken that review, he would have got a reprieve there. The first impression we also had was maybe that was going down the leg side. Let's just wait for this. The Netherlands team, they all in a huddle. They are extremely happy. They have done a good job, really, Shivendra. They have kept things tight. They are not given any easy runs. Of course, there are a few short deliveries which has been punished. This once again, just rolling the fingers around that one, and the point of impact, I'm not too sure. Was there a bit of bat onto that one? That is what the third umpire would be looking at. Well, the ultra edge would tell us whether there was a bit of bat. Rohit immediately went up for review, which means he thought, yes, I do think as the ball passed the bat, Shivendra, there's that slight spike in that ultra edge, and if that is so, we'll wait, and of course for the official confirmation. Yes, the third umpire has ruled in Rohit's favour, so a reprieve there. It seems to be Rohit's day. Of course, this was a right decision because he had got a bit of bat on this one. This time, once again, this is over. Fine leg, not really being able to get the elevation he wanted, dropping short of the fielder, rushing in from long leg, and a single is all that accrues. Or in fact, end of the over, in fact, 8 overs completed, and India getting a bit of a move on there. Shivendra in that last over, 48 for 1. Virat Kohli looking his sedate best on 10. Rohit trying to break free. 2 sixes he has hit, unbeaten on 28. A 4 and 2 sixes in that score of 28. क्रिकेट का रोमांच पूरी तरीके से देखने को मिलता हुआ सिडनी क्रिकेट मैदान पर। भारत और नेदरलैंड्स की टीमें T20 विश्व कप के इस मुकाबले में सुपर 12 का ये मैच है, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीता है। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 48 रन बनाए हैं भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर के समाप्त होने के बाद रन बनाने की रफ्तार अगर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं तो बहुत ज़्यादा धीमी भी नहीं है, और रोहित शर्मा
क्या लिविंग डेंजरसली उन्हें कह सकते हैं? यकीनन कह सकते हैं। 24 गेंदों में 28 रन उन्होंने बनाए हैं। आक्रामक स्ट्रोक्स भी शामिल हैं, जीवनदान भी उन्हें मिले हैं। विराट कोहली दूसरे छोर पर सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदों में 10 रन उन्होंने बनाए हैं और भारत का स्कोर है 48, 1 विकेट के नुकसान पर। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। नेदरलैंड्स की ओर से शरीज अहमद स्पिन गेंदबाजी करते हैं आए हैं और पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, अच्छी बल्लेबाजी करने का भी प्रयास किया था। गेंदबाजी में तो अच्छा प्रदर्शन रहा ही था और यहाँ पर भी स्कॉट एडवर्ड्स को उनसे उम्मीदें होंगी। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी, लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं शरीज और गाहे बगाहे गुगली का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। पिछले मैच में देखने को मिला था। पिछली गेंद पर हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया, मिडॉन की दिशा में 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। भारत हाफ सेंचुरी से सिर्फ 1 रन पीछे, 49, 1 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की रफ्तार 6 रन प्रति ओवर से नीचे है और पहले 6 ओवर में 32 रन बनाए गए थे भारतीय टीम के द्वारा। 1 विकेट खोया केएल राहुल का। और नेदरलैंड्स की ओर से गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन किया जाता रहा है। क्लासन, प्रिंगल, यॉन मैकरन, डेली डे और वॉन बीक, लोगन वॉन बीक ने अभी तक गेंदबाजी की है और अब शरीज आए हैं। इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेला गया स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नमूना आउटफील्ड में। वहां पर संभवतः डिलीडे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नमूना पेश किया उन्होंने और जहां निश्चित तौर पर किशोर 4 रन ऐसा लग रहा था, जब बॉल ट्रैवल कर रही थी तेज रफ्तार से बाउंड्री की ओर, ऐसा लग रहा था कि 4 रन बनेंगे, लेकिन पूरा फुल थ्रॉटल उन्होंने डाइव लगाया और 50 रन इसके साथ ही भारत के पूरे हो गए हैं 33 मिनट पे 51 मिनट की बल्लेबाजी में। क्षेत्ररक्षण पर आपकी प्रतिक्रिया? Yes, it was it was 100%, more than 100% commitment. Excellent work in the field, surely saving 2 runs for his side, Shivendra. तो भारत का स्कोर अब 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पिछली गेंद पर 2 रन लिए गए, 4 के बजाय 2 रन मिले। शरीज ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद गुगली का इस्तेमाल करते हुए, जैसा हमने इशारा किया था दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, मिडल और ऑफ स्टंप पर पिच करने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलने के बजाय अंदर की ओर आती हुई और यहाँ बाउंड्री लाइन पर काफी रीइंफोर्समेंट कर रखा है। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं। एक शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, उसके अलावा एक खिलाड़ी स्क्वायरिश थर्ड मैन की दिशा में। और अब फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है और चूंकि मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं शरीज, तो उसके मुताबिक उन्होंने एक खिलाड़ी को मिड ऑन की दिशा से मिड ऑफ की दिशा में तैनात किया है। 51, 1 विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद और यहाँ लाइन और लेंथ से हल्का सा भटकते हुए ऑन साइड में लो फुल टॉस पर ऐसा लगा कि हाफ वॉली पर बल्कि मोड़ा गया ऑन साइड में स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक दाईं ओर। हालांकि शॉट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, लेकिन 1 रन मिला भारतीय बल्लेबाजों को। 52, 1 विकेट के नुकसान पर 52 फॉर 1। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नेदरलैंड्स के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप के इस मुकाबले में 8.5 ओवर की बल्लेबाजी के बाद रोहित शर्मा 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार हाफ वॉली पर खेला गया स्ट्रोक स्क्वायर लेग की दिशा में, नो मैंस लैंड में गिरती हुई सिंगल बाउंस पर आती हुई गेंद। फील्डर वहां पर मौजूद थे, लेकिन 1 रन आसानी के साथ मिलता हुआ और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ। 9 ओवर के खत्म होने के बाद भारत 53, 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। आउट होने वाले खिलाड़ी केएल राहुल बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके, जरूर निराश हुए होंगे अपने प्रदर्शन से। हालांकि जो निर्णय था वो भी खासा दिलचस्प था और उससे भी दिलचस्प था कि दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी खासी किशोर मंत्रणा की थी। अगर हम काउंट करें तो ऐसा लगता है कि पलक झपकते ही 15 सेकंड हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी आपके पास समय होता है रिव्यू के लिए जाने का। और ये दिखाया पिछली बार जब रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया, उन्होंने शायद मेरे ख्याल से 2 सेकंड लगाए होंगे और तुरंत रिव्यू के इशारा कर दिया था, बिकॉज ही वॉज मोर देन कॉन्फिडेंट कि जो गेंद थी वो उनके बल्ले से टकराई थी। Yeah, that's right. And KL Rahul back in the dugout would really be a disappointed man. But had he taken that review, it would have gone in his favor. But there's no place for ifs and buts in cricket. That's in the past now. India getting to 53 in fact at the end of 9 overs. This time, once again, very little room for there to play that cut shot. Rohit Sharma, he manages to just get a bit of bat onto that. Vikramjit Singh is there of Indian origin. He's fielding there at position which can be best described as someone towards deep gully or maybe very short third man. And good strategically placed fielders. The Netherlands team seem to have done their homework and they've really done extremely well in this ICC T20 World Cup. And in fact, my mind goes back to 2019 T20 World Cup, where they
upset England. Here is the next ball, and this time once again the ball standing up, and this time Rohit Sharma on top of that one as he cuts it away for 4 runs. This was a slow ball, but Rohit saw it early, really gauged the length well, and on top of that one as he cut it away for 4 runs. So Rohit Shivendra somehow trying to come to terms with himself here. This time really playing a good shot. बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक उनके बल्ले से निकलता हुआ, और ऐसे स्ट्रोक्स की दरकार है रोहित शर्मा को, क्योंकि न केवल आपकी स्कोरिंग को आगे बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास में भी वृद्धि करते हैं, और भारत के पक्ष में कोई बहुत ज्यादा स्कोर अभी है नहीं, जबकि आधी पारी समाप्त होने वाली। इस बार मिसक्यूट शॉट है, ये नवा में उछली है, क्या कोई फील्डर वहां पर मौजूद है? जी नहीं, क्योंकि बाउंड्री लाइन के बाहर है, तो वहां पर सिर्फ दर्शक फील्डर की भूमिका निभा रहे हैं। Well, Shivendra, that is why it is said the quality of bats is so good that, as you very rightly said, it was a miscued shot, and even on this huge Sydney cricket ground that went for a 6. So really Rohit Sharma, but one must say that in many ways Rohit Sharma, in fact 50 of the partnership comes up 41 balls, informs Jatin Sood in a stay of 28 minutes. Jatin Sood our scorer, and Manoj Kumar our statistician, always on the dot, keeping us giving us all the minute details, and so difficult especially in the shorter varieties. Time is so less. The next one, once again a half volley. This is driven into the deep cover region. There's a sweeper out there, which means only a single. And what is good to see is Virat Kohli, after that superlative knock of 82 not out, he's really committing himself very well, starting from scratch, so to say, not going for any big hits, slowly building up his innings, rotating the strike well, and it is Rohit who is taken on the role of the aggressor. Here is Dilede, right arm over the wicket, and this time that's classical Virat Kohli there as he drives it into the covers, not able to find the gap, but gets a single all the same. Netherlands bowlers have done a good job. They are not allowed the top order of India to really fire away, to get off to a flying start. They kept things in check, and had those catches been taken, Tim Pringle in particular, twice reprieve to Rohit Sharma, who knows what India's position would have been right now. But full marks to the Netherlands team, the way they have fought initially in the qualifying stage, and then getting into the Super 12. They bowled well against Bangladesh. They lost that game, but their bowlers have always delivered. It's the batters who let them down in that game against Bangladesh. Next ball, a bouncer, a slower bouncer, which really didn't go as high as as the batter was expecting, and it went slightly down the leg side, and that's why it was called a wide by the umpire. Michael Goff calling it a wide, and India get an extra run and an extra delivery as well. After 9.5 overs, India winning the toss and batting at 66 for 1. And the Indian cricket lovers would be hoping that India makes a big score here. The next one, once again, Rohit Sharma steps out, and the bowler seeing it, fires it on the leg side. He still manages to get a bit of bat onto that one, gets a single on the onside, and that completes the 10th over. At the halfway stage, India are 67 for 1. There will be a slight drinks break at this juncture, which also give us an opportunity to discuss the progress of India in this game against Netherlands. Shivendra, Rohit Sharma winning the toss, and at the toss itself he said that he had a feeling that the surface is slightly on the slower side, and that's why he would like to bat first, and then the Indian spinners can come into play. This the second match being played on the day, because earlier we had Bangladesh taking on South Africa on the same pitch at the historic Sydney cricket ground. बिल्कुल दूसरा मुकाबला आज का खेला जा रहा है T20 विश्व कप के तहत, जहां पर नेदरलैंड्स और भारत की टीमें आमने सामने हैं। विराट कोहली इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ है रोहित शर्मा, भारतीय टीम के कप्तान, टॉस जीतकर जिन्होंने आज बल्लेबाजी करने का पहले फैसला किया। और केएल राहुल आउट हुए, उन्होंने 9 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया। जब केएल राहुल आउट हुए उस समय भारत का स्कोर था 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और पहले 10 ओवर का जो लेखा जोखा है उसमें 67 रन भारत ने बनाए हैं। जतिन सूद जानकारी दे रहे हैं, उसमें 1 विकेट खोया है भारत ने। डॉट डिलीवरीज हैं 26, सिंगल्स लिए गए हैं 21, कपल्स यानी 2 रन लिए गए हैं 7 बार, और 3 चौके लगे हैं और 3 ही छक्के लगाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन इस जानकारी के लिए।
तो भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया और नीदरलैंड से पहला T20 मुकाबला टीम खेल रही है। नीदरलैंड बांग्लादेश से 9 रन से हारे थे। आज बांग्लादेश देवर कॉम्प्रिहेंसिवली बीटन बाय साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने बहुत ही पेशेवराना अंदाज में खेल का प्रदर्शन किया और खेल के हर क्षेत्र में बांग्लादेश को पीछे छोड़ा। विराट कोहली 53 गेंदों में 82 रन पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ पर भी पूरी तरीके से कंट्रोल में दिख रहे हैं। 16 गेंदों में 14 रन उन्होंने बनाए हैं। और क्या दिलचस्प बात है किशोर कि T20 विश्व कप में 1000 रन के आसपास वो पहुंचने वाले हैं। विराट कोहली 5वां T20 विश्व कप है उनका और वर्षों का अनुभव और तमाम मुकाबलों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव उनके पास है। और हमेशा भारतीय टीम जब भी वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो भारतीय जो प्रशंसक हैं वो उनसे 100 से ज़्यादा कम से कुछ उम्मीद करते ही नहीं है। That's right, Shivendra, and that's why, especially in chases, as you said, when the team is chasing, that's why he's known as a chase master. And every time he's got a 50 plus, India have gone on to win that match while chasing. And another very interesting information coming our way, courtesy of our statistician Manoj Kumar. He says that this is the 26th innings in which Virat Kohli and Rohit Sharma are batting together in T20 internationals. Till date, they have so far collected 940. That's like just 60 runs short of 1,000 runs at an average of 37.16, which includes 3 century partnerships. Thank you, Manoj Kumar, for that very interesting statistic. These two have been the backbone of the Indian batting for many years now in all formats. Not only the T20 or the one-day international, even in test matches, all formats players, both Rohit Sharma and Virat Kohli. Virat Kohli, of course, was the captain of India before he gave up the T20 captaincy following the debacle in the last T20 World Cup in UAE. And then Rohit Sharma has taken over as a skipper in all the formats. Here's Pringle now, left arm round the wicket, and this time with the spin, just turning it towards the short, towards the square leg region rather, gets a single. And Rohit now, after that initial aggression, now slowly trying to build an innings, and that is what Indian cricket lovers would want from Rohit Sharma, though these days for the sake of the team he goes slam bang. Here is Virat Kohli to the next one, slightly giving that ball air, and Virat Kohli as always to the pitch of that one. Such good footwork that he has exhibited as this one, and this is going, he's purposely chipped that ball towards mid-off for a single, who is a little deep. And in that knock of 82 not out against Pakistan, he displayed an array of strokes, and especially never to be forgotten was that 6 he hit Harris Rauf off the back foot, and then that flick towards fine leg for a 6. This time it's Rohit Sharma sweeps well into the gap, 4 runs. So Rohit Sharma now, after that initial hiccups and the reprieves he got, slowly but surely moving towards what should be a fine half century. It will be good for him. He's getting back on the runs. This time he was perfectly in position, Shivendra, to execute that sweep shot. खराब गेंद थी प्रिंगल की, लेग स्टंप के बाहर रूम देते हुए, और बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक लगाया गया रोहित शर्मा के द्वारा, 4 रन। और
Who's ready for some